Okay, so students, we will today start the topic that is engineering mechanics. ठीक है? Note करो. So, in your engineering mechanics, what we have is we have certain topics that we want to cover. So first will be the introduction to engineering mechanics. Second, we will do the basic concept or system of forces. Basic concept and system of forces. Then third is the type of forces in which we will understand the basic concept and system of forces. There will be coplanar concurrent forces, coplanar concurrent forces. Then you have fourth is your components in space. Components in space. Then fifth is a resultant or movement of forces. Fifth is your resultant and movement of forces. Then we want to understand the application. In application, there will be what is the couple and how we going to resolve the forces in the couple. Then after this, we have the equilibrium of system of forces. Seventh point is equilibrium of system of forces. System of forces. ये टॉपिक्स को आप साथ के साथ लिखते रहो. Keep on writing these topics. Then is your free body diagram. Then 8th point is your free. वहां से जाके ना white paper ले आओ notes बनाने के लिए. Free body diagram. Body diagram. Then is equation of equilibrium of coplanar systems. Equation of equilibrium of coplanar systems. Coplanar systems. Okay. And spatial systems. Okay, so these are all the topics which we going to cover in our first unit, that is introduction to engineering mechanics. So ये लिख लो, ठीक है? अच्छा. So basically, when you say what is your engineering mechanics, so basically engineering mechanics is dealing with all the system of forces and how we going to understand these forces. This we want to see on the board. Now see, whenever we are understanding the force, so what is important is whenever you are understanding the force, what you have to understand is what will be the magnitude of the force, what will be the direction of the force, what will be the point of application, and what will be the line of action of the force. Okay. Now suppose if I write down one question here, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि how you want to understand the system of forces and what are the characteristics of the forces. Now see, when you say that there is a question says, okay, it says draw the free body diagram. Draw the free body diagram. Alright, draw the free body diagram of magnitude of force
of magnitude of force. Now, what is the magnitude of the force given? It is given 4 kilonewton. 4 kilonewton. And direction is 40 degree. And direction is 40 degree. So, with respect to this type of question, how we will generate the free body diagram? Okay. So, to generate a free body diagram, first of all, what you will do is you will create an imaginary line, and through this imaginary line, you will create a line of action of force with respect to 40 degrees. So, corresponding this particular point, you will create a line that will be 40 degrees. So, using a D, put down the D here, measure the 40 degree, and then draw a line. So, what you did is you draw a line. The line was 40 degrees. So, this line is basically representing my 40 degree, and I am representing this line as 40 degree. Okay. Now it says I have drawn an imaginary line from A point to B point, and I am on this particular line of action of the force. I am representing my magnitude of the force, that is 4 kilonewton. So what I will do is I will create a line, and I will represent this line as force will be equivalent to 4 kilonewton, and I will say that this line is being generated from point C. Okay, so what are the steps being taken here? The step says draw the free body diagram of a magnitude of the force, that is 4 kilonewton, and the direction is 40 degree. So to make this free body diagram, we generated one imaginary horizontal line. With that particular line, we created another imaginary line with 40 degree, and on this particular line, we drew a magnitude of the force that was 4 kilonewton. So this is the magnitude which I have drawn here, that is represented by 4 kilonewton. Now, what is important is we know that we have generated the magnitude, we know that we have generated the direction, and we should also know what is the point of application of this particular force, that is I have generated 4 kilonewton. So the point of application is represented at this point. So I am representing as this point C is the point of application. Okay, so this is the point of application. So when you have small magnitude, means if you have the forces that are in Newton, so when you have small forces that are represented, small forces are represented in Newton, whereas your large forces are represented in kilonewton. Forces are represented in kilonewton. Okay. Now here also one important thing is we have drawn here the point of application. Then what will be the line of action? Line of action will be this complete line. So I say my AB is your line of action in this case. Okay. And from point C is the point of application. So this type of questions will come that you have to draw a free body diagram. So this is the generation of a free body diagram. Is it clear? Okay. Now we have the system of forces. In this system of forces, I will now draw the block diagram that will represent my type of forces in our engineering mechanics. So in this type of forces, we have a block diagram or a tree that we will generate. ये समझ आ गया आपको? Draw करो ना, इस पे register पे type करो. Okay. Now after that we will create the system of forces. After that we will create the system of forces. Okay.
So in this system of forces, we will create a block diagram. I am now going to create a block diagram. Now in this block diagram, if I say how the forces are being distributed. So we have a force system. Now this force system is further distributed in two types of further systems, that is your coplanar and planar. So this is your coplanar and this is your non-coplanar. Okay, non-coplanar. Now further this coplanar is further divided into collinear, parallel, concurrent and non-concurrent. This is further distributed into collinear, then after collinear is your parallel, then after parallel is your concurrent, then after concurrent is your non-concurrent. Similarly, with your non-coplanar, there are further divided into three types of forces. One is your parallel, then second is your concurrent, then third is your non-concurrent. So remember these types of system of forces. Okay. Now I will make you understand the first type of force system, that is your collinear force system. So now we will understand this collinear force system. To make it more vibrant, we can add some colors in it. Okay. So to make it, first draw a line. I have drawn an imaginary line. Okay. Drawing an imaginary line, then represent this with a block and mention these forces. Suppose I have your P1 representation. Similarly, I have your P2 representation and I have your P3 representation, or either the direction of force is in the opposite. So I have P3. So what I have represented here is, I have represented three types of forces that are occurring in a collinear plane. Okay, so collinear has the line of action is same. Okay, so in this line of action, all the forces are acting on this imaginary line, and force P1, force P2 and force P3. Force P1, then you have force P2, then you have force P3. So all these forces are lying on a same line of action. So that's why we are representing this as your collinear force system. So this is a representation of a collinear system. This is clear? Okay. Now write down some definitions of coplanar, and I will make you dictate for non-coplanar. Okay. Okay. Now it says basically coplanar means it is lying on the same plane. Okay. And non-coplanar says it is not lying on the same plane. So write down the definition for a non-coplanar force system. When the line of action of all the forces, does not lie in one plane, then that is known as your non-coplanar. Force system. So this is the non-coplanar force system. So this is the definition for a non-coplanar system. Write down, for
concurrent force system. If you say what is a concurrent force system, concurrent force system, write down the definition for a concurrent force system. The force when extended, the force, concurrent force system, the force when extended pass through a single point, the force when extended pass through a single point, and the point is called point of concurrency, and the point is known as point of concurrency. The force when extended pass through a single point, and the point is called and the point is called point of concurrency, and the point is called the point of concurrency. Full stop. Full stop. The line of action of all the forces, the line of action of all the forces meet at the point of concurrency, meet at the point of concurrency, meet at the point of concurrency. Now it can be, this concurrent forces may or may not be coplanar. ये भी पॉइंट लिख लो इसके अंदर, may or may not be coplanar. It can be planar or it can be non coplanar. अच्छा बच्चा, ये जो लास्ट में आपके एक पॉइंट लिखा है दैट इज योर नॉन कॉन्करेंट, ठीक है. अब ये इसका क्या मतलब हुआ नॉन कॉन्करेंट का? वो कहता है कि जब भी सारे के सारे फोर्सेस आ रही है वो एक पॉइंट पे मीट करे तो उसको हम कह रहे हैं कि दैट इज योर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. अब सारी की सारी फोर्सेस आ रही है वो एक पॉइंट पे नहीं मीट करती, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज योर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. तो इसकी डेफिनेशन लिख लो. इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि व्हाट इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? When the force of a system does not meet at a common point, when the force of a system does not meet at a common point of concurrency, common point of concurrency, this type of force system is known as, this type of force system is known as, तेरा पेन कहाँ है? बच्चे एक पेन दे देना. So this type of force system is known as non-concurrent force system. बिना पेन की क्लास में बैठे हुए, बिना मतलब कि हाथों से एक्शन कर रहा है, इसका क्या मतलब? बैठो, फिर मैं इसके बाद ना नेक्स्ट सेशन लूंगा आपको, ठीक है. तो लिख ली डेफिनेशन, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नाउ बच्चा नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट इज योर कोप्लेनर. लिखो कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. राइट डाउन अ फोर्स सिस्टम. बेटा पहले इसको समझने के लिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम. इसको रब कर दूं मैं, ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे. जब भी आपने कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है या कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है. डायग्राम से क्या होगा, आपकी हेल्प होगी ताकि आप पॉइंट टॉपिक को मोर क्लियरली समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको. सो आई विल मेक अ डायग्राम and in this diagram I will show you different types of force systems. Okay, now suppose we have a line, draw a line, write down this line as A and B. इसको A लिखो और इसको B लिखो, ठीक है. अब सिमिलरली आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर दो ऊपर की साइड, 1 2, ठीक है, आपने ट्रायंगल क्रिएट कर दिया.
अब आप क्या करो, इस सेंटर पर्टिकुलर पॉइंट से 3 टाइप की फोर्सेस को जनरेट करो। एक फोर्स जनरेट करी बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अब ये सेंटर पे इसको रिप्रेजेंट मैंने करा एक रो से, इसको मैं डेजिग्नेट करूंगा, इसको कौन सा नंबर देना फोर्स को। देन इज योर अनदर टाइप ऑफ फोर्स, देन इज योर अनदर टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप एरो से रिप्रेजेंट कर दो। तो एरो इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन दैट पर्टिकुलर plane. Now suppose this is the point of application of a force that is coming in this direction and I am representing it as F1. Similarly a force that is represented by F2. तो बच्चा ये टाइप का जो सिस्टम होगा, दिस विल बी अ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना हमेशा। क्या क्या पॉइंट्स का? कि इसके अंदर एक तो हमारे जो रिएक्शन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारा रिएक्शन लगेगा, दैट रिएक्शन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड आई एम डेजिग्नेटिंग इट एज आर ए एंड आर बी। सिमिलरली देयर विल बी अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट center point, there will be a force that is represented by P. So this is how this free body diagram is in equilibrium, or we are representing all the types of forces. इसके अंदर आपने मेंशन नहीं किया, अगर ये F1 F2 है, then we are representing this as F3, then this is F4 and this is F5. So this is a complete representation of a कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इज इट क्लियर? ये डायग्राम समझ आ गया? अब देखो, देन आई विल क्रिएट अनदर डायग्राम। द अदर डायग्राम इज if this diagram is representing your coplanar, and if I say coplanar non-concurrent force system, so how the diagram will be created for this type? So this will be point A, point B, and we have the reactions that are represented as RA and RB. Okay, then you have the force that is coming in this direction. I am representing this force as F1, and this F1 force is at a particular angle theta. Then you have force F2 that is going in the upward direction, and then you have a force F3 that is coming here, and I am representing is at alpha. So what I have created is, I have created a free body diagram for a coplanar and non-concurrent force system. Coplanar and non-concurrent force system. अब बच्चा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था? What is the difference between the two types of systems? कौन बताएगा? हाँ गुड़िया बताओ। बेटा वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसका ये बेसिकली एक पॉइंट से फोर्स जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्शंस में जा रही है, और यहाँ देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, वो कहीं पे अभी आके फोर्स लाई कर रही है। तो जहां फोर्स आपकी किसी पॉइंट पे भी आके लाई कर देगी तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और यहाँ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सारी की सारी पॉइंट ऑफ फोर्सेस हैं, या तो वहां मर्ज कर रही है या वहां से जनरेट हो रही है। तो आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ मर्ज कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या इस पॉइंट से जनरेट हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ द फोर्सेस, point of generation of the forces. So this is what you say types of the systems. अब एक टाइप का मैं और क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों तो क्रिएट कर दिए, ठीक है। वन मोर टाइप आई एम क्रिएटिंग हियर इज, आपने वो देखा कि बिजली का जो पोल होता है, बिजली का जो पोल होता है, उस पोल पे हम बेसिकली क्या करते हैं, उस पॉइंट से अगर तो हमारी पीछे से डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, या तो हम अपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइन में, या हम उसकी अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो उस सिस्टम्स में जहां आपके पोल्स होते हैं, तो हाउ यू क्रिएट दिस, इसमें बेसिकली आप क्या करो, एक पोल क्रिएट करो, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोल
okay, from this particular force, you will then create three types of point joints, that is representing the point of application of the force. आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करा मैंने P1 से, इसको रिप्रेजेंट करा Q से, P से, Q से, और इसको रिप्रेजेंट करा मैंने S से। तो जहां इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो दैट इज, तुम कहां से चलो आप क्लास में आ तो गए हो, तो थोड़ी शांति रखो, ठीक है। और इसमें टॉपिक था, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेशन, ये आपको चैनल के अंदर मिलेगा, इसको हम टॉपिक दे देंगे। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन टू द फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो जितने स्टूडेंट आए हैं उनको तो विजिबल हो जाएगा, जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहे वो अपना चैनल के थ्रू विजिबिलिटी देखेंगे कि टॉपिक हम कौन कौन से कवर करते हैं। तो ये रिकॉर्डेड सेशन में टॉपिक्स जो है स्टूडेंट्स का छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट वन मोर थ्री बॉडी डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नीचे डायग्राम बनाएंगे। सो बेटा आवाज नहीं, मैं इसको डायग्राम को बहुत जल्दी क्रिएट करता हूँ। So when you have these types of representation of your forces, so I am representing this as point A, point B, point C and point D. Similarly, we have a force that is represented as P1, P2, then you have P3 and this is your P4. So what do you call this type of system? This is a non-coplanar and non-concurrent force system. Write down non-coplanar, planar and non-concurrent force system. ये clear? कोई doubt, कोई problem? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। नेक्स्ट लेक्चर किसका है? कौन सा टॉपिक है? एक बच्चा जाके सुनो, एक जाके नोटिफाई करो कि सर नेक्स्ट क्लास 10-15 मिनट 10 मिनट पड़ेगा। आप नोटिफाई तो करो जाके, कोई मीटिंग नहीं, ठीक है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, देन वी विल do the next topic of force system. Here we will understand the principle of superposition of the forces. So our next topic will be principle of superposition of the forces. Principle of superposition of forces. इसको समझने के लिए हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करेंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या कहता है? ये फ्री बॉडी डायग्राम कहता है कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है, जिसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो होगा क्या? जब ये फोर्सेस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, तो मेरे रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लगेगी? द रिजल्टेंट फोर्स लाई इन दी
center. So this will be my resultant force. Resultant force. So if I say, if this is an application, if I say this is a board, and in this board, this is my point of application of the force, and if I say one force is acting in the above direction and one force is acting in the below direction. So how I will generate my resultant force? So this principle of superposition of the forces says that when two forces are acting at a particular point, then there will be a resultant force being generated, and the resultant force will be the mid of both the P as well as the Q. So this is the concept of the principle of superposition of the forces. समझ आ गया? So now we will do the certain type of numericals in our tomorrow's session, and I अपना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आना. क्या लेके आना? साइंटिफिक कैलकुलेटर 300-400 रुपए का आएगा मार्केट से. स्टेशनरी वाले के पास जाना, उसको कहना मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दे, क्योंकि ये दिस होल पर्टिकुलर यूनिट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका न्यूमेरिकल से भरा हुआ है. ठीक है, तो आप बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास में मत बैठना. न्यूमेरिकल चलेंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है.